हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। अगर आपका भी शौक है गेमिंग का तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग गेम प्लेस रोज़ लाता हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एलॉय एक और सीक्रेट लैब में पहुँच गई है और यहाँ पे उसको एक होलोग्राम मिला था एक जनरल का। और उस होलोग्राम में हमें पता चलता है कि जनरल जिस तरीके से बताता है कि मशीन्स अब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और किसी भी टाइम इस वक्त ह्यूमन रेस एक्सटेंड हो सकती है। तो उस जनरल ने तो पूरी होप लूज़ कर दी कि ह्यूमंस नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए अब सारा जो भी अब होप है वो सिर्फ एक मिशन ज़ीरो डॉन पे बचती है जो एलिजाबेथ ने प्लान किया है। क्योंकि देखा जाए इतने हज़ारों साल बाद भी ह्यूमंस हम सर्वाइव कर चुके हैं इस गेम में। भले ही ट्राइबल हैं, थोड़े प्रिमिटिव हैं, बट ह्यूमन रेस सर्वाइव कर गई। तो वो कैसे सर्वाइव कर गई है, वो मिशन ज़ीरो डॉन क्या था, वो हम इस गेम में अब पता करेंगे और हम एलिजाबेथ के बारे में और इस गेम में पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे जैसे हम लैब में आगे बढ़ रहे हैं, इक्लिप्स के यहाँ पे और मेंबर्स आ गए हैं। तो पहले इनको थोड़ा ख़त्म करते हैं भाई, ये तो सब जगह पहुँचे हुए हैं। और आई गेस जैसे जैसे गेम बढ़ रही थोड़े से ये लोग भी एडवांस हो रहे हैं। ये कुछ नए वेपन के साथ मार रहे हैं। इसमें से भी काफ़ी अपने आप ही कुछ, जैसे दिवाली के टाइम पे पटाखे नहीं होते, एक बार बस चलाओ तो फिर नॉन स्टॉप निकलते रहते हैं पटाखे, उस टाइप का कुछ वेपन था ये भी। तो चलो सबको ख़त्म कर दिया, देखते हैं आगे क्या मिलता है। You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world, and most important, how not to repeat our mistakes.
It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. ये है प्रोजेक्ट ज़ीरो डॉन। तो एलिजाबेथ ने ये प्लान किया कि जिस तरीके से अगर मशीन्स ही अर्थ को ख़त्म कर रही है और ह्यूमंस को एक्सटेंड कर रही है, तो मशीन्स ही वापस हेल्प करेंगी ह्यूमंस को वापस सिविलाइज करने के लिए। तो उन एलिजाबेथ ने प्लान किया बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बनाना, जिसका नाम उन्होंने गाया रखा है, जो वापस इस अर्थ में ह्यूमंस को रीपॉपुलेट कर पाएगी। लेकिन गाया सिर्फ एक कोर है और उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। और अगर आपने अभी देखा होगा उसमें से एक फंक्शन था हेडीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हेडीज़ वहाँ पे करप्ट हो गया, उनमें से एक प्रोग्राम, जिसने ये सब प्रॉब्लम इशू कर दी। क्योंकि अगर एलिजाबेथ का प्लान देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने एक एआई बनाया था, जिसका ना सिर्फ काम होगा वापस रीपॉपुलेट करना अर्थ को ह्यूमंस के साथ, बट ऑल्सो उनको इन्फॉर्मेशन देना, ताकि उन लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता हो और प्लस उनको सब नॉलेज हो, ताकि वो वापस उस एडवांस सोसाइटी में आ सके। बट जैसा हमने इस गेम में देखा कि इतने एडवांस नहीं हो पाए हैं अभी भी ह्यूमंस यहाँ पे। तो वो मुझे लगता है कि शायद हेडीज़ में भी शायद करप्ट हो गया, तो इसकी वजह से इतना हम एडवांस नहीं हो पाए। बट फिर भी जो एलिजाबेथ का प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। भले ही अर्थ एक पॉइंट पे अगर हम ह्यूमंस एक्सटेंड हो गए थे अर्थ से, फिर भी वापस हम अर्थ पे आ गए। तो कह सकते हैं कि अगर भले 100% उनका प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ, बट एटलीस्ट 90% तो हुआ। एंड हमको अब इस गेम में आगे यही करना है कि हमको पूरा उनका वो मिशन जो था, जो उनका ये प्रोजेक्ट था ज़ीरो डॉन, उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो फिलहाल देखते हैं हमको और क्या क्या मिलता है आगे। Eclipse, they're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. जहाँ जाओ ये एक्लिप्स वाले बंदे पहले पहुँचे होते हैं। एक तो पहले ही इतनी टेंशन है, ऊपर से ये लोग पहले पहुँचते हैं और हेडीज़ इन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आई फिर हेडीज़ इनको क्यों सपोर्ट कर रहा है। मतलब हेडीज़ क्या चाहता था ये भी समझ नहीं आया मेरे को। हेडीज़ का पर्पस क्या है फिर? क्योंकि अगर वो नहीं चाहता ह्यूमन सर्वाइव करे तो वो इस ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रहा है? बहुत कुछ है भाई इसमें। तो अभी तो थोड़ा बहुत पता करना है। ऐसे काफ़ी कुछ अब हमको पता चल गया इस गेम में, काफ़ी आंसर्स पता चल गया। और कुछ और यहाँ पे आते हुए एक्लिप्स के बंदे, अब मैं इसी वेपन की बात कर रहा था कि जैसे वो नॉन स्टॉप पटाखे छोड़ रहा हो यार। ये वेपन यूज़ करने ही नहीं देते यार, बिल्कुल ही टाइम ही नहीं देते। मतलब एक यूज़ करने जाओ तो पीछे से दूसरा बंदा आ जाता है। रुको यार, अरे भाई, अरे यार दो इसको यूज़ करने का थोड़ा सा वेट कंट्रोल। अब ठीक है, क्या मज़ा आ जाता है यार इस वेपन को यूज़ करके। क्या लेकिन स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है, ये ड्रॉबैक है इस वेपन का। मतलब बेचारी एलॉय चल ही नहीं पाती यार इस वेपन को उठा के। चलो कोई नहीं। तो फिलहाल और आगे आगे हैं, यहाँ पे कुछ और मेंबर्स हैं। भाई कब्जा करके रख लिया इन्होंने सब जगह। जल्दी ख़त्म करते हैं भाई। आओ भाई, कहाँ छुप गए? कोई नहीं आ रही, ठीक है हम ही ज़रा छुप छुप के मारते हैं फिर इनको। यहाँ से करते अपना स्नीक अटैक। मेरे को लगता है शायद दोनों एक साथ चले जाएंगे। Okay, no more sneaking. गया नहीं यार, बच गया। मेरे को लगा था शायद
वो भी साथ में ब्लास्ट हो जाएगा उसके, क्योंकि उसके पास भी वो फ्यूल वाले टैंक जो कैन होते हैं। चलो कोई नहीं, दूसरी तरफ से देख लेंगे बाकी बंदे गए हैं। ऊपर की तरफ है शायद ये By the sun! What's that? ये भी खत्म। और भी हैं यार अभी तो यहाँ पे। They're giving up. 2-3 ही रह गए, दिख नहीं रहे यार। मैं इतनी अच्छी जगहों पे हूँ, हाइट अच्छी खासी मिली हुई है, लगा आएंगे सामने, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। वो रहा क्या यार, अच्छा What's that? अच्छी पोजीशन पे था मैं यार। इधर आ भाई, तू क्या चाहिए थे बोला इससे, इधर आ। Farewell. बाकी का है, ये भी इधर ही है। चलो दूसरा भी साथ में यार। That's the last of them. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. देखता हूँ क्या क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे, क्योंकि अब हमको बहुत इंफॉर्मेशन, मतलब अच्छी खासी अब स्टोरी हमको पता चलती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं इस गेम में। हमारे मोस्टली जितने भी डाउट्स है गेम को लेके, बट अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। जैसे अभी तक एलॉय कौन है, मतलब इन द सेंस कि ये आई कैसे है उसके। तो जहाँ तक मुझे, तो अब मेरे को कंफर्म ही है कि एआई ने इसको बनाया है मशीन में, जैसे टेस्ट ट्यूब पे भी आई गेस कुछ उस टाइप से इसको कुछ क्रिएट किया गया। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतने सालों से जो एलिजाबेथ होगी उसकी जनरेशन्स शायद आगे चलती आ रही हैं, तो शायद इसलिए इतना डीएनए मैच कर रहा है एलिजाबेथ और एलॉय का। वो चीज़ मेरे को पॉसिबल नहीं लगती। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे तो अब काफ़ी होलोग्राम आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इन्होंने बनाए होंगे ये सब। तो ये सब मशीन होगी कुछ। Our goal is to preserve the human genome. Machines to spawn a new generation of human beings. वैसे ठीक है, प्लान तो अच्छा किया था, सब कुछ प्रॉपरली सेट किया हुआ है यहाँ पे। जैसे भी देखो मशीन सब उतनी वेल इक्विप्ड मशीन है यहाँ पे। Elizabeth said a new सब generation. कुछ होलोग्राम इमेजेस बनाई हुई है, यही पूरा सेट किया हुआ है। सिर्फ एक कहीं गलती हो गई शायद वो हेडीज को लेके, Home of the mountain. अदरवाइज One of them? प्रॉपर There's सेट था only सब one कुछ। way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about crown and king Collective alpha of registry. Gaia's subordinate functions. I need to search Elizabeth's office. यार इक्लिप्स वाले बंदों को भी लिंक खत्म करना है, उन्होंने भी बहुत सारी दर्दी लगा के रखी हुई है। बहुत कुछ है अभी भी यार गेम में। अभी तक तो मज़ा आ रहा है गेम खेलने में सही में। मतलब अगर स्टोरी वाइज भी कहूँ, स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, कुछ गेम प्ले में कुछ मेरे को हल्के हल्के इश्यूज हैं, बट अदरवाइज Pure logic won't cut बहुत it, अच्छा Ted. लगा मेरे को। Pull this off. Gaia's going to need to have some skin in the game. It has ये to भी care. एलिजाबेथ What if it runs amok? ये We वही learn टेड से nothing from बात our कर रही। mistakes. Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? अच्छा ये रही शायद एआई Of course, गाया। Gaia. Go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Pharaoh's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely तो सही predictable. बनाई है। To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? ठीक है, तो मतलब गाया को भी इतनी मतलब समझ है चीज़ों को लेके कि अगर मैं अभी खुद एज एन एआई पूरी डेवलप नहीं हुई हूँ तो शायद इसके फ्यूचर में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो अगर यार एआई इतना ही सोच रहा है अच्छा, तो भाई सोचो कितनी बड़ी चीज़ बना दी थी यार उस वक्त एलिजाबेथ ने।
जैसा हम देखते हैं आयरन मैन में टोनी स्टार्क ने बनाया होता है। Apologies. Though ये मैं बोलता Kemper's उससे भी launch उसने showed कुछ superior हाई लेवल पे बना spacefaring दिया capability. एलिजाबेथ ने। You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I have gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That जल्दी they बताओ passed यार forever कुछ into oblivion आगे स्टोरी मेरे को लगता causes है ये me to सब experience होलोग्राम यही सब चलता रहेगा। You will undergo a brief I period guess of आगे चलना unconsciousness चाहिए during मेरे को relocation to Prime and final instatement. क्योंकि इसमें तो पता नहीं क्या क्या May I speak outside इनके protocol? मैसेज होंगे बट जाना किस साइड है। वापस जाना पड़ेगा Distress. यार इधर ही शो कर रहा है बट इधर कुछ है नहीं। I realize that circumstances फाइंड द compel us to एंट्रेंस work ओके earlier than we hoped. कहाँ से All इसका subsystems ऑफिस are operational. ये The odds ये set in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. मेहनत करवा दी इतनी Survive फालतू में। unless you're wearing an environmental... कुछ लगते थे एक छोटा सा बाकी दरवाज़ों को खोलने का था वैसे कुछ उसमें भी लगा देते। कोई नहीं तो ये मशीन क्या है भाई ठीक है इसको एक्सेस करना है। The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage.
His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. You're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted.
Asha faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! अरे शर्म करो भाई, बिना वेपन्स के इतने बड़ी मशीन के आगे छोड़ दिया है यार। कुछ तो शर्म करो, एक वेपन तो दे देते यार। अब क्या करूँ उस मशीन के आगे? भांगड़ा कितना डालें, क्या करें? रुको यार, वहाँ पे ऑप्शन आ जाने का, शायद वहाँ कुछ मिले। हाँ गैलॉय भाग। अब तो कुछ ऑप्शन नहीं भाई। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे चढ़ने की जगह भी नहीं, क्या करना है भाई? यार पागल मशीन पागल मशीन आ गई यार, कुछ तो बताओ। अच्छा सॉरी, उसको रैम करना है। ठीक है रुको, मशीन को आने दो एक मिनट यहाँ पे। अच्छा कहाँ गई मशीन? आजा भाई, आजा जल्दी से। इसको गिरा दिया। अब आ गए हमारे पास अपने वेपन्स। अब आ भाई इधर तुझसे बड़ी मशीनें हमने गिराई हैं, तो ये क्या मामूली सी मशीन है। कहाँ गए? रुक जाओ यार, मार लें हम भी। ये कहाँ है भाई? ये भी जब हम यहाँ पे सिटाडेल में एंटर किए थे तब हमने ऊपर से देखा भी था कि कुछ लोग ऐसे फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं सोचा था हम खुद ही यहीं पे होंगे। चलो कोई नहीं यार, अब तो उसको ख़त्म कर ही लेंगे। अब इतने अच्छे वेपन है अपने पास। एक तो अपना फोकस चला गया ना, बस उसका थोड़ा सा गम है। ये हीलीज ने तोड़ दिया फालतू में, बट चलो कोई नहीं। अब देखते बिना उसके कैसे गेम होगी यार। फिलहाल ये मशीन भी तंग करने लगी है, थोड़ा सा इसको भी ख़त्म करते हैं जल्दी। फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ से भागने का तरीका भी देखना पड़ेगा। देखते हैं स्टन में जल्दी। यार अरे यार, मैंने वेपन चेंज नहीं किया, सॉरी। मुझे लगा ट्रिप कास्टर मैंने स्विच किया है, बट हुआ नहीं। एक तो यार थोड़ा सा मेरे माउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जल्दी स्विच नहीं हो पाता। कोई नहीं, बिना उसके ही कर लेते हैं। अब लगाते हैं ज़रा ट्रिप कास्टर। किसी एक पे तो लग यार, ये तो उस पर थ्रू निकल गई। कुछ हुआ ही नहीं इसको यार। क्या मशीन है, तो कुछ खोल दूँगा। चलो ऐसे ही ख़त्म करते हैं इसको।
फायर से ही होता है इनको ज़्यादा डैमेज, इसी से ख़त्म करते हैं जल्दी। अरे यार ये भी बोल्डर्स फेंकने शुरू हो गई। चल 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 चल, बहुत सही, बढ़िया भाई बढ़िया, ख़त्म मिल जाने वाली है। हो गया इसका भी गेम, बहुत सही। चलो लूट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। Shadows, kill her. Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the Sun Ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse. Not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake,
I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! भाई क्या एंट्री मारी है साइलेंस ने, इससे अच्छी उसकी एंट्री नहीं हो सकती थी गेम में। बहुत ही क्रूशल टाइम पे उसने हमको बचाया एंड फाइनली हमको अपना एक नया फोकस मिल चुका है, थैंक गॉड, जिसके थ्रू हम स्कैन कर पाएंगे एंड आगे गेम कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अब हीलिस ने ऐसे कहा था कि वो हमारे जो हमारा होम टाउन है उस पर अटैक करने वाला है, तो हमको किसी भी तरीके से वहाँ पे जाके उसको बचाना है, बट वो हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस रोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।